All right, so Prashant, shall we get started? Yes, let's start. All right, perfect. So, yeah, first of all, a very good morning, guys. Thank you so much for tuning in. If you're watching this, thank you so much for tuning in on a very early Sunday morning. Yep. So, meanwhile, while others join, please do subscribe to both the channels, FFDG Hyderabad and my channel, Hyderabadi Tech Guy. So, before I start, if you guys could drop some comments in the chat, it would be really great. Let's set some fire today for a really early morning start on a Sunday. So, have you guys had breakfast? How's your day going? What are your plans for the weekend? Shoot something in the chat. Meanwhile, I'd like to introduce you to a very interesting person. Before which, I'd like to set the agenda of today. So basically, this is a series of events that we planned online so that you guys don't have to RSVP, come all the way to a venue and you know uh, consume a lot of effort and time. So this is a series where we'll be talking a lot about FlutterFlow and a lot about Flutter itself as well. So this is like a one-on-one chat where we have a chill discussion, not very much serious types like your tech talks or something. We'll have a chill discussion where you guys, audience, can get most of it and could derive a lot of insights out of it. So this is the season one of Fireside Chat with FlutterFlow Developer Group Hyderabad, and today we are going to talk about prompting in FlutterFlow. And to talk about prompting in FlutterFlow, we have a very special guest coming up all the way from Nagpur. Well, he leads FFDG Mumbai, but right now he's in Nagpur. So, guys, give a huge round of applause, a lot of thumbs up and rockets in the chat for Prashant Dalai. Thanks for very energetic like introduction. I am not like in that kind of mood, but yeah. Acha, Prashant, so go on, introduce yourself to our audience, and then let's start with some questions. And let me also set the agenda how it's going to be. So I'll be asking you a few questions. You can, just tell that uh, how you people can give an approach to it, and then we'll try to have a rapid fire round as well. So also, I'm wearing a cap just like you do and a black hoodie. I was very selective about this choice. So Okay, just like okay. Prashant, I'm wearing a cap and a black hoodie, guys. Also, another reason is my hair is not good on a Sunday morning. I had to wake up early, so that's a plus point for me as well. So Cool. yeah, over to you, Prashant. Thanks Moin for पूरा frame एकदम same दिख रहा है. So yeah, cool. So my name is Prashant Dalai. If in case you have attended last FFDG Hyderabad, which had happened in EPAM, right? So I was there. And we literally had lots of fun and great sessions. So yeah, I do these kind of stuff. That's why I'm here, like for in-person Nagpur chapter. I was there. So yeah, I do this kind of thing, Saturday Sunday, meeting people and taking sessions. So and right, like Moin has started this beautiful initiative where I don't have to be physically be there, but I can chat and solve your query. So it's very good. And yeah, and I was supposed to give my introduction, so that's it. And by the way, I'm a SD2 at Direction Softwares LLP at Mumbai, Lower Parel. Uh, yeah, and also I lead FFDG Mumbai, and I talk about AI and Flutter more. So yeah, and Prashant Ardalai is my surname. Like साथ में we have username everywhere social में. So if in case you find anything, like you can take this screenshot as well and post it what you are thinking about this whole thing, and tag Moin, tag FFDG Hyderabad, tag FlutterFlow itself, or Dreamflow we have. So yeah, we will talk about this Dreamflow as well. We have a different kind of surprise for you, like we have, but yeah, we'll talk about that. But yeah, that's it from my side. Moin, over to you. All right, perfect. So yeah, to start off this really good Sunday morning, first of all, how was the Nagpur event? Yeah, it FF was. Nagpur. Uh,
Yes, yes, it was too good in terms of, when it comes to tier two cities or Nagpur's audience was 70-80% students, so I was not expecting, very uh, techie or they know everything. But to be honest, I literally surprised. Like people were very aware about these things, and they were talking in how to prompting in JSON and Tune, and like I was very surprised to see this, and very happy as well, because that's first thing, because Gen Z को पता होना चाहिए what they are Right. to write. So वो है, and yeah, it was too like fun event. Okay, I think my presentation just got stopped. Yes, I can see prompting in FlutterFlow. So you have Acha, to acha. press. So, okay, let me present that again. Perfect. All right. So yeah, well, in while we are talking, somehow you mentioned about tune. I was supposed to make a video about that today, and of course, I'll try to. I'll first try to go for a haircut, take off this cap, and then try to make a, a video about tune. What do you think about tune? Like, I saw a couple of YouTubers say that JSON is dead. I'm like, nahi bhai. General API में tokenization नहीं होता. So, uh, what do you think? What's So your take on tune? so far, I haven't tried this. So उस चीज पे Mm-hmm. बात करना है, like कि अलग चीजों पे बात करना. तो I have tried this JSON as prompting. So what happened? I have prepared something as I want to show. Uh, Mm-hmm. yeah. So like, can we start this whole thing before like you supposed to share the agenda and everything? No, we've already started this. Okay. So like, I can I share, just, right? yep, yeah, sure, sure. Okay. Okay. Now I let am me stop sharing my the screen. presentation and you can take over. Cool. All right, perfect. Also, just make sure you share a window or whatever. If you're comfortable with sharing the whole screen, you can. Yeah, yeah, I can. Perfect. So let me know. Okay. So you have to present, I guess. Wait a minute. I have to add it to the stream. Yes, yes. Perfect. You're on screen. Ready to roll. Cool. So it was this was the the whole title, stop debugging AI, the bug is in your prompt. And Yeah, so this was title, because at the end of the day, I don't know, I will not ask you because I know the answer, because I guess Moin, you will agree that 99% of the people today, we are chat GPT developers, not 100%. Flutter, not AI, or not kind of ChatGPT, but in general, we do AI, deep the everything white AI code, does, right? you can say. So yeah, so in we actually code in English, to be honest. Like we Exactly. actually everything, अगर आप word का आगे पीछे कर दोगे, तो there will be different meaning altogether. So Exactly. yeah, so yeah, I have already given them my intro. So core message is AI is not broken. So when AI gives wrong answers, we think the model is faulty. But most of the What? time, our instructions are incomplete, ambiguous, and misleading. तो because हम लोग कभी कभी वो मतलब वो चीज़ें, तो मैं दो चीज़ आपको एकदम मस्त से बता के जाऊंगा. So you will never fail, to be honest. 90% of the time इट्स कम्युनिकेशन बग एंड नॉट अ कोडिंग बग. तो आप अगर अच्छे से बात कर पा रहे हो, एंड अगर आप वर्ड प्रॉपर यूज कर पाओगे, एंड आफ्टर दिस सेशन फॉर श्योर आप कर पाओगे. सो ओके, तो मैं इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, राइट? बिकॉज़ संडे मॉर्निंग में मैं मतलब इतना ज़्यादा इसमें नहीं करूँगा. मैं आप लोग को मैं डायरेक्टली सी ये मेन दिखा देता हूँ. जो डीबग प्रॉम्प्ट लाइक कोड, राइट? सो इसमें होता क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपका अगर आप प्रोफेशनल हो, राइट? तो आपके जेस्चर से आगे रहता है, राइट मोइन? Right, सभी correct. ऐसा लिस्ट 10 पिक्सल यहाँ है बटन, 10 पिक्सल वहाँ है बटन, एंड बहुत सारा लॉजिक, अरे ये तो चल ही नहीं रहा है. सो वो आपको उनको टेस्ट करना है कि आपके टेस्टर ने अगर रिक्वायरमेंट अच्छे से लिखा है या नहीं. उसको कॉपी करो और जस्ट एक बार पेस्ट करके देखो एंड सॉल्व दिस. ऐसा हम लोग आई गेस करते भी रहेंगे. सो अगर वो प्रॉपर कर ले रहा है, सो योर टेस्टर इज ऑल्सो एआई टेस्टर, बोल सकते हो उसको.
सो अगर नहीं है तो यू हैव टू बी एंड उसमें अगर एज केसेस सोच के देखो, लेट्स सपोज वी आर फ्लटर की बात करें, राइट? सो स्टेट मैनेजमेंट ऑफ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका ग्लोबल रूल्स ऑलरेडी सेट होना चाहिए। तो मैं कल भी कह रहा था, आज भी कहूंगा यहाँ पे भी कि प्लीज ग्लोबल रूल सेट करो कि हाउ योर लाइक, इफ इन केस अगर आप किलो कोड यूज करें तो उसमें वो चीज़ें हैं, एंड ऑब्वियसली कर्सर में भी है और बहुत सारे टूल्स में ऑलरेडी रहता है। तो यू कैन एक्चुअली सेट द प्रोजेक्ट लेवल एंड ग्लोबल लेवल लाइक रूल्स एज वेल। सो वो चीज़ तो आपका स्टेट मैनेजमेंट और चीज़ें, बिकॉज व्हाट हैपेंड मोइन, कि अगर जैसे हम लोग की रिसेंट में बहुत सारे स्टार्टअप्स आर अडॉप्टिंग टू फ्लटर, Mm-hmm. due to this, 5 interns या 5 freshers they hiring and 1 manager is having 5 years of experience। उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता, बिकॉज फ्लटर जुना है भी नहीं, राइट? तो वो 5 years वाले बंदे को पूरा मैनेज करना होता है। तो एवरी वन इज प्रोड्यूसिंग कोड, राइट? Mm-hmm. ड्यू टू ए आई, एवरी वन इज प्रोड्यूसिंग कोड बाय ए आई, एंड एवरी वन इज सबका अलग चल रहा है। कोई क्लीन आर्किटेक्चर यूज कर रहा है, कोई कुछ अलग, राइट? तो एटलीस्ट वो मैनेजर का इतना काम है कि आप जो लाइक पर्टिकुलरली अगर आप फ्रेशर्स को दे रहे हो तो प्लीज गाइड उनको, बोलते हैं ना, रूल सेट करके दे दो कि आपको इसके, हाँ, ये भी उनको सेट करना पड़ेगा, एंड वी हैव टू, वो हम एरा में है। तो या हम लोग को एआई को भी ट्रेन करना पड़ेगा, बिकॉज वो एक पेयर प्रोग्रामिंग होती है फ्रेशर्स और उनके साथ में। सो या टेस्ट विद कंस्ट्रेंट्स, मतलब अगर उसमें भी टेस्टिंग, तो अगर आप, हाँ, बाय द वे, आई डोंट नो वेदर यू आर यूजिंग, हैव यू ट्राइड मोइन एंटी ग्रेविटी? And of course, I have. I feel like it's cursor on So, steroids. so third point is already covered in anti-gravity. So you don't have to. So there is three part, if in case you are not tried, so please try this. So what happened? Like they actually anti-gravity create the project plan. अगर आप प्रोसीड करते हो, देयर इज टू, कि आप प्रोसीड करने पे टैप करते हो तो करता है वो, नहीं तो नहीं। और एक है कि ऑटोमेट, राइट? सो आप उसको प्लान अप्रूव करते हो तो वो कोड करेगा, देन इट एक्चुअली टेस्ट आल्सो। दैट्स वेरी गुड पॉइंट, मतलब अब तक मैंने नहीं देखा था। एंड या वर्जन कंट्रोल द प्रॉम्प्ट, सेव गुड वंस, राइट? तो मैं ऑलरेडी आपको बता दूंगा कि फोर्थ की आपको इतनी जरूरत पड़ेगी नहीं, बट या स्टिल। And yeah, bad prompt looks like this, right? Generate Flutter API integration, ऐसे कुछ नहीं इसमें आगे, ना कंटेक्स्ट ना कुछ है, राइट? तो इसमें आउटपुट आप क्या, मतलब इट्स लाइक कि आप मैं सीधे फोन उठा के किसी को बोल दूं, हाँ आ जाओ यहाँ पे। तो कहाँ आना है, लाइक किधर आना है, आप कौन बोल रहे हो? लाइक पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन था, राइट? सो रॉन्ग पैटर्न, नो सिक्योरिटी, मतलब कोड के लेवल पे तो यही सब रहता है, राइट? Let me give you the good prompt look like same similar context में. Say this, okay? Generate a Flutter API integration using HTTP package, model class for response, and error handling for 400. Okay, so before this, अगर जैसे कोई अगर फ्रेशर देख रहा है, राइट? तो आपको अगर बेसिक आता है, then only you can come up to this point. You can Correct. a good prompt, because आपको HTTP पैकेज या मॉडल क्लास फॉर रिस्पॉन्स या कुछ चीजें पता ही नहीं है, तो हाउ यू कैन मतलब आपको समझ में ही नहीं आएगा। एटलीस्ट हम सुपरवाइज तो करने की हालत में रहे एआई में। तो वो चीज़ है कि मुझे बहुत पूछते हैं कि अभी हमको तो कोडिंग की ज़रूरत ही नहीं है, कोडिंग सीखना भी क्यों ज़रूरी है? भाई अगर कोडिंग सीखोगे ही नहीं तो बेसिक्स पता कैसे रहेंगे? कि मतलब यहाँ पे भी प्रॉम्प्टिंग में भी तो आपको स्ट्रक्चर तो आपको ही देना है ना, और Correct. सुपरवाइज Architecturally, आप कभी गलत हो नहीं सकते. राइट। तो आप फिर वो करोगे, मतलब आपको ही करना है ना। तो वो चीज़, और डीबग अगर विदाउट बेसिक नॉलेज के करोगे, सो इट विल टेक आई गेस इनफाइनाइट टाइम। तो वो चीज़ है, राइट? तो या दिस इज द सिचुएशन इफ इन केस वी विल गो द अदर वे। पिक प्रॉम्प्ट 2-3 मिनट्स, फिक्स एआई कोड 30-60 मिनट्स, ये तो हम मिनिमम पकड़ा है। फिक्स बग्स फॉर बैड एआई कोड वीक्स, आई गेस इट्स नॉट months actually। The ROI is obvious, we Yeah. know, we know it, so that's why we have that, we have seen that cleaning tech debt, और ऐसा कुछ तो रोल आया था, राइट मोहित? Correct. हाँ, लाइक क्लीनिंग बैड कोड और समथिंग, वो भी एक रोल है कि आप उसको पूरा रेपो को पूरा एकदम क्लीन करते हो ऐसे। तो दैट्स व्हाई दिस काइंड ऑफ रोल्स आर लाइक इमर्जिंग राइट नाउ। अभी हाल ही में आई वाज डूइंग दैट बिकॉज़ एक बहुत पुराना प्रोजेक्ट था।
I was tasked to only refactor the whole thing, because especially after the 16 KB वाला जो update आया है ना, Android. anyway आप फ्लटर अपग्रेड करोगे, सो दे वर लाइक हाथ ही हाथ रिफैक्टर भी कर देना. एंड दैट वाज अ मास्टरपीस एक्चुअली. इट वाज भाई, इतना मैंने व्हाट डू वी से कमेंट्स तक देखे हैं जहाँ पे पीपल आर यूजिंग सम सर्विस, एंड बस एपीआई की के जगह पे अभी भी वो ब्रैकेट्स है वेयर इट इज रिटन लाइक योर एपीआई की गोज हियर, मेक श्योर यू रिप्लेस इट. दिस वाज देयर इन प्रोडक्शन कोड. उसमें आपने नाम नहीं चेक किया कि जैसे उसमें वो आता है ना चैट जीपीटी का, हाँ, ऑफ ये कोर्स प्रशांत गिट को वो नाम चेक गिट मैंने करके किया है. देना चाहिए था। So yeah, and yeah, this is the 4C. तो मैं जिस दो चीज की बात बता रहा था उसमें से एक ये है. तो इसमें ये फ्रेमवर्क है. इफ इन केस अगर आप देख रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर ये चार याद तो कोई नहीं रख पाएगा, तो दैट्स व्हाई कहीं तो लिख लो. कंटेक्स्ट, कंस्ट्रेंट्स, क्लैरिटी, चेक्स. ओके, हु आर यू, जैसे मैं बोल रहा था कहाँ आना है, तो आप कंटेक्स्ट सेट कर दो. हु आर यू, व्हाट इज द सिचुएशन, लाइक आप डिबग कर रहे हो, क्या कर रहे हो, राइट. तो किलो कोड मैंने देखा है कि वहां पे ना, मोइन आपने किलो कोड ट्राई करा है क्या? नहीं, आई एम अ बिग टाइम So, 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 current of person. so this is basically another AI tool, but it is so good. We have 5 categories. You are planning now, Mhm. coding, architecture खाली बना रहे हो, राइट, और आप डिबग कर रहे हो. तो सब कुछ उसमें ना कैटेगरी वाइज है. तो वहाँ पे ये बहुत मैंने ये सीखा कि कंटेक्स्ट आप दे दो कि व्हाट इज द सिचुएशन राइट नाउ. कंस्ट्रेंट्स दे दो, क्या लिमिट्स है, कितना लाइक बाउंड्रीज आपका ये चीज़ है, राइट, कि कितना किस, बिकॉज कोड का भी एक लिमिट होता है कि आप इसके सी आप एक विजेट बना रहे हो, राइट, जो रीयूजेबल कंपोनेंट होने वाला है, तो आप Mhm. उसको 3,000 लाइन की कोड में लिखोगे तो मतलब क्या, फिर आप उधर ही कर दो. सही है. 20 जगह पे करना है तो वही कर दो. तो क्लैरिटी, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन. ओके, एग्जैक्ट इंस्ट्रक्शन में नो फजी वर्ड में मैं आपको एक चीज बताता हूँ. आई हैव लर्नड फ्रॉम guy from like a good company who has have established a good name in Mumbai ka ecosystem, AI ecosystem. So he highlighted 3 words. Okay, those 3 words are not your what you are thinking about, Moin. नहीं, So नहीं, मैं भी चाय 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 सोच रहा था सुबह इसलिए. ओके, ओके, नॉट चाय चाय चाय, बट चाय का लाइक आई डोंट नो, लाइक चाय चाय मेरे भी नहीं समझ में आया. लाइक इट्स लाइक थिंक अल्ट्रा हार्ड. ओके, अच्छा. सो ये अगर आप कोई भी प्रॉम्प्ट में डालते हो ना, तो वो एक काइंड ऑफ वो है कि उसको ऑप्टिमाइज कर देता है. एलएलएम का मैक्सिमम आउटपुट आता है, राइट. इट्स लाइक मैंने भी सुना और ट्राई भी करा है, तो इट एक्चुअली वर्क्स, राइट. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप वर्ड्स ही तो पास कर रहे हो. मतलब जैसे राइट. मैं सेम ये करूँ और आप भी सेम करो, राइट, बट मेरा एक अच्छा आउटपुट. दैट्स वेयर आई एक्चुअली कोड इज नॉट बायस, एआई इज नॉट बायस. इट्स लाइक सेम फॉर एवरीवन. सो या आपका जो वर्ड सिलेक्शन है वो रहना चाहिए. चेक्स, एक्सपेक्टेड आउटपुट फॉर्मेट, ये मुझे चाहिए, राइट. तो ये है. करेक्ट. तो ये दो चीज थी कि 4C. आप ये कंटेक्स्ट, कॉन्स्टेंट्स, क्लैरिटी, चेक्स, ये लिख लो और उसके सामने अपने अपने बोलते हैं ना, अपना फिल इन कर लो, राइट. दैट वे, और लास्ट में ये 3 वर्ड्स लगा लेना. लाइक 90% ऑफ द टाइम यू विल नॉट फेल कहीं पे भी, डीबग भी एंड कर रहे दिस हो. इज रियली ब्यूटीफुल. जबकि लेट्स से पहले ये प्रॉब्लम बहुत होता था मुझे पर्सनली, बिकॉज एवरी डेवलपर हैज हिज ओन स्टाइल ऑफ राइटिंग कोड. यस, 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 यस. तो तो अभी यहाँ लेट्स पे से मे बी डोंट, यहाँ पे वो चीज बहुत लाइक मिनिमाइज हो जाएगा और आप. मिनिमाइज हो जाता है कंप्लीटली. यस, यस, ग्लोबल रूल्स अब अगर आपने सेट करा है सबके लिए, तो इट विल बी मोर टेम्पलेट हम लोग फॉलो कर रहे होंगे कि जो हम लोग एकदम प्रॉपर, लाइक एआई में भी हम वो अभी कर सकते हैं कि हम एक प्रॉपर फ्लो फॉलो करें फॉर ऑल, जो राइट. हम हार्ड कोडिंग में भी नहीं करते थे ऑब्वियसली, बट या अभी तो लाइक thousands ऑफ लाइंस ऑफ कोड आ रहे हैं, तो दैट्स वी हैव टू थोड़ा सा ज्यादा अग्रेसिवली करना पड़ेगा, राइट. सो दिस वाज इट. Yeah. So this issue wasn't the model, it was my lazy prompt, right? आपने सिर्फ लिख दिया, जैसे कि मैंने बताया था बैड prompt का example. The truth is you don't need a better model, you need a better prompt. So yeah, just kidding, but not really. Did AI hallucinate or did we hallucinate clarity when we type the prompt, right? So like
जब भी मैंने वही कहा कि हेलुसिनेट कर रहा है यार मेरे को, लाइक बहुत बहुत टाइम होता है कि अरे जेमिनी तो मेरा इमेज ही नहीं दे रहा है, ये तो कुछ और ही दे रहा है, राइट? राइट। तो प्लीज प्रॉम्प्ट, हाँ मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि कभी कभार ऐसे हो सकता है, बट आप अगर प्रॉपर देते हो तो मतलब मोइन यू हैव सीन राइट, तो आई हैव यूज नैनो बनाना इज लाइक क्रेजी, लाइक Crazy. Absolutely. So and it was the time when नैनो picture. बनाना गूगल ने भी इतने जोर से पुश नहीं किया था जितने हमने वर्कशॉप को भी कर दिए थे उस पे। Yeah. So let me reveal this, guys. If you have seen the cover image, thumbnail जो है ना ये वीडियो का, उस पे the picture of Prashant has been generated by Nano Banana. Actually, it's not generated. It's actually filtered ऐसे वे में, because the original pic is that, but जो आप black and white देख पा रहे हो, right? तो मैंने ये flutter, ये actually image है, तो इसका मैंने flutter भी करा था। I was trying, तो Nano Banana Pro is too good, too good. Like, by the way, अगर like I have already started this न्यूज़लेटर as well, where like अगर संचार साथी फ्लटर में आप बनाए तो उसको हम लोग डीबग भी कर रहे हैं। तो उसका मैंने थंबनेल बनाया था, इट्स सो गुड। अगर आप किसी भी इंसान को दिखा दोगे कि आप लाइक जैसे प्रो जो चार्ज करते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल, तो वो सेम वे में नैनो बनाना प्रो बना रहा है, एंड विदाउट एनी स्पेलिंग मिस्टेक, टू बी ऑनेस्ट। सो Without any spelling mistake. या, यस, नैनो Wow. बनाना प्रो का जो नया वर्जन है, सो दैट्स वेयर। Superb. Great. स्टॉप फिक्सिंग द आउटपुट, स्टार्ट फिक्सिंग द इनपुट। तो जैसे बोलते हैं ना, लाइक जो बोगे क्या वही काटोगे, ये तो तो वैसे। हमारी एआई डेवलपर्स की लैंग्वेज हो गई, गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो और थर्ड पॉइंट यहाँ पे है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इक्वल टू क्लैरिटी इंजीनियरिंग। तो आप अगर एकदम आपको We are क्लैरिटी है, not talking about MS Clarity, guys, please. ओके, ओके, बट बाय द वे हैव यू ट्राइड दैट? मैंने उसका वो पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ा, एंड हाउ Yes, टू बी we ऑनेस्ट we इट्स have put it to use at in a lot of projects. I think I'm not supposed to say this, but नो, office में कुछ applications है in which we are using MS Clarity. they have open for flutter support ना, तो हम like Yep, it's good. Hmm. it's good. It's better than so basically जितने भी tracking platforms अभी हैं, they charge you really heavy. Yes, true. So MS Clarity has become like one shot solution for all of these things. Yeah. Uh, yeah. ये तो नहीं, बट सो क्रिएटर्स के लिए कुछ है, बट आई गेस ये मेरा लिंक्डइन है, और इफ इन केस एनीवन इंटरेस्टेड टू बी इन this, and apart from this I want to show, by the way, this whole thing is made in Flutter. It's coded, by the way, Moin, have you noticed this? Wait a minute. This presentation is Flutter. Yes, yes, yes. Brilliant. It is a Brilliant. macOS application. Okay. Okay. तो see this, तो ये आपके Yeah, प्रेजेंटेशन पे होगा pretty ये। decent. It's not lagging. It's pretty decent. या, तो yeah, by the way, it's for you. You better not go to this slide. YouTube channel start किया है, पहली वीडियो में स्ट्राइक पड़वाओगे क्या यार? No, 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 ऐसा कुछ like we can actually name it. No, it's not an issue. We'll get you there eventually. So by the way, this whole slide took me around 15 minutes. So आप जो देख रहे थे ऑटो वाला, राइट? तो वहां पे Mhm. मैं बस इमेज ऐड कर रहा था ये वाले। Aha, okay. That's it. सोचो like Nice. Okay, so these are coming from your assets and everything else. What about the content? How are you managing content in this? Acha, so you've everything made is prompt, sir. Everything is prompt. it's acha, nice. Brilliant. This is a fairly good job. So Nice. yeah. So because All right, अगर so हम let's go jaldi. I think we are at 9:34. So let me take over your sharing and let's ask a few questions to Prashant and then we'll have a small rapid fire. After that, we'll wrap up. before that, I want to highlight this Dreamflow ka like hackathon, uh, from hack to skill. Let's do that at the end. How about it? Sure, sure. Let's when you no, please go ahead, please go ahead. When you've started the Okay. topic, when you say hackathon, a lot of people might be skipping to this position. शायद ये वीडियो पे वो पीक आएगा यहाँ पे मोस्ट रिप्लेड करके. हाँ, because यहाँ पे
यहाँ पे एक्चुअल सरप्राइज है ना. Yeah. Yeah, this one. So guys, What? Dreamflow is sorry, Flutterflow is organizing a super exciting hackathon on Dreamflow. So, what is Dreamflow? You might be thinking Flutterflow, Dreamflow relation kya hai? So, Prashant, please tell them what is Dreamflow and how is this linked to Flutterflow? Okay, FlutterFlow, this is actually a child product of FlutterFlow, and DreamFlow is basically the same platform where it's kind of the other जो भी आप vibe coding prompt से आप बना सकते हो एप्लीकेशन. DreamFlow में आप बस उसको context अच्छे से prompt करो with all features, ये आपको पूरा proper app बना के देगा and you can try it out. आप अगर नए email ID से अगर sign up कर रहे हो तो you can get 10 credits for free. And and apart from this, if in case just आपको sign up करने से ही you will get two good surprise already. Mobin का आपको pro मिल रहा है, right? Mobin is a great platform to take inspiration. UI जो भी आप जो देख रहे हो इन ड्राइवर से लेकर I have seen स्विगी और जोमेटो के सिमिलर सब कुछ लाइक सब कुछ वहाँ पर है. फिग्मा का इंस्पिरेशन फॉर लाइक यूआई ऐसे आप यू कैन गेट. And also you can pass that particular to here as well, if in case you want to make it. And also we have 11 labs ka subscription as well. So that's the thing provided by Dreamflow to overpower आप अपने आप को कर पाओ कि अगर आप कुछ बेसिकली बना रहे हो तो या सो ऐसा. एंड मेंटरशिप है, गाइडेंस है. और मतलब इतना प्राइस पूल तो आपने देख ही लिया होगा, $25,000. तो वो ये प्रोसेस है, राइट. और थीम्स भी मैं आपको दिखा देता हूँ. सी ये 5 थीम है. तो बेस्ट ऐप ऑफ द हैकाथॉन, बेस्ट डिजाइंड ऐप, मोस्ट इनोवेटिव ऐप एंड कम्युनिटी फेवरेट, और एक बिल्डिंग पब्लिक है. आई वुड सजेस्ट एवरीवन टू गो विद दिस वन because not many people are doing this. So this we want actually. तो आप community के इसमें ज़्यादा because it's a open थीम. इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, राइट. आप कुछ भी बना सकते हो. आपको कुछ कुछ भी आइडिया है तो लाइक दे आर ओपन फॉर एवरीवन, राइट. सो या, एंड anything you stuck somewhere, please reach out to us, please reach out to Moin. And like we are just text कर दो, that's it, जो भी आपका डाउट है. And that's it from buildathon का, right. Yeah, you can take over, Moin. Yep, sure. Also, guys, please make sure you register before the time runs out. So, uh, who knows? Your first time can be your winning time as well. It's a hackathon. We cannot expect surprises. I mean, we can expect surprises. Sorry, we cannot expect the usual stuff. All right, all right. नहीं नहीं, ये अभी नहीं. अभी क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. Oh, I'm presenting the wrong tab itself. Oops. This one, right. Okay, okay, okay. I think Prashant, you're still sharing. Oh God, sorry. So, Stop share. Perfect. Now you can. perfect. Okay, just give me a thumbs up if you can see my screen. Not yet. Okay, just a minute. How about now? I think yes, perfect. So yeah, let's get quickly started with the questions, and it can be generic answers. It need not be long. It can be okay-ish, just so that me as a if let's say I'm a beginner or the audience is a beginner, we could easily understand. So let's go with our first question. That is, what exactly prompting mean in the context of Flutterflow? Because let's भाई देख बहुत सारे developers हैं out there.
अब ऐसा है कि यहाँ पे अपने हैदराबाद में एक बहुत फेमस स्लैंग में बोलते कि पत्थर फेंक के मारे तो इंजीनियर को लगता। उतने सारे इंजीनियर्स हैं, सो पीपल डेवलपिंग आउट देयर हैव different mindset because some person are working on a different tech stack, some people are working on a different tech stack, and then if they want to try FlutterFlow, it's the narrative changes. So what does prompting mean in the context of FlutterFlow? सो फ्लटर फ्लो के इसमें मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा बिकॉज इट्स नॉट मेंट टू बी अ लाइक वाइब कोडिंग थिंग, इट्स अ विजुअल कोड। तो वहाँ पे आप बेटर ये है कि आप एक ही बार में एक प्रॉपर लेआउट आप फाइनलाइज कर दो एंड दैट्स वेरी गुड वे, राइट? सो दैट्स व्हाई वी हैव ड्रीम फ्लो फॉर दैट, राइट? वहाँ पे प्रॉम्प्टिंग ज़्यादा है, वहाँ पे हम फ्लटर यूज़ करते हैं। तो जो भी मैंने बताया इट्स अप्लाई फॉर दैट। जो भी ग्लोबल रूल्स की मैंने बात की, राइट? स्टेट मैनेजमेंट आप ऑलरेडी बता दो, तो मतलब आप फ्लटर में अगर आप प्रॉपर प्रॉम्प्टिंग कर पा रहे हो तो ड्रीम फ्लो पे भी आप कर पाओगे। एंड एनी प्लेटफॉर्म वेयर फ्लटर इज, बाय द वे, कोई भी मोस्ट ऑफ द जितने भी वाइब कोडिंग प्लेटफॉर्म है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स, मोस्ट ऑफ द प्लेटफॉर्म आर नॉट सपोर्टिंग सो फार फ्लटर और इन जनरल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट एज वेल। So yeah. All right, so next question coming up. This is a headache everywhere where we have code standardizations and there are some lock-ins for the team. So how exactly can teams collaborate and standardize prompts across a larger flow project? Because if you can see, let's say if a team is working on a FlutterFlow project now with the collaborate feature, they can work together. They can see their cursors as well with their name. So how does prompting come into this picture, and how do code standards come into this picture? Code standards, see, the thing is कि you can code in your VS Code as well in Flutter. So अगेन सेम थिंग है कि आप ग्लोबल रूल्स अगर आपने सेट करा है एंड प्रॉम्प्टिंग विल बी द सेम। या अगर आप कर्सर में करो वीएस कोड, इट वहाँ पे हर जगह पे हम कर तो सकते हैं, हर जगह पे रूल सेट कर सकते हैं कि आप कुछ भी प्रॉम्प्टिंग हो प्लीज ये चीज़ होनी ही चाहिए। तो अगर आप चैट जीपीटी पे भी आप ये चीज़ कर सकते हो, और अगर आप अपना खुद का भी चैट जीपीटी बना सकते हो, लाइक आई हैव क्रिएटेड माय ओन विथ ओन कंटेक्स्ट एंड एवरीथिंग। तो या Pro में ही अवेलेबल है, तो या इट्स एवरीवेयर द सेम। एंड वेयर वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलैबोरेशन, सो I guess already FlutterFlow में we have that code versioning, तो like you can create your branch and everything, so वो same हो जाता है जो आप पहले VS Code में करते थे। तो it's not very different what we already used to you do it, right? Right. Yeah, Got it. that's where things are like very get smooth. Mm, Moving ahead, let's talk a bit about mistakes. Jo everyone makes them. So, what are the biggest mistakes? Let's keep this one crisp because a lot of beginners also might come and watch this video. So, Mhm. beginner mistakes people make while writing prompts for FlutterFlow projects. मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आप लाइक एक सेंटेंस में आप बोल दो कि मुझे यहाँ जाना है, राइट? ये अगेन वही मैं बोलूंगा कि आप कहाँ जाना है, लाइक जो मैंने 4C एंड जो 3 वर्ड्स मैंने बताए हैं, राइट? तो वो फॉलो करेंगे 2 रूल्स और यू आर ऑल सेट। 90% ऑफ द प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो जाती है। और हाँ, ये प्रॉम्प्टिंग की बात है। बाकी आप ग्लोबल रूल सेट करके भी चीज़ें, मतलब मैं बार बार ग्लोबल रूल्स इसलिए बोल रहा हूँ, या प्रोजेक्ट लेवल भी आप रूल सेट कर सकते हो, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी आर ऑल वाइब कोडिंग एवरीथिंग। तो वहीं वहीं पे चीज़ें आके अटक जाती है, जहाँ पे कोड स्टैंडर्डाइजेशन की बात होती है, तो वहीं पे चीज़ें अटकती है, राइट? वी आर नॉट कोडिंग और हार्ड कोडिंग एनी मोर, राइट? Right. तो वहाँ पे चीज़ें हैं। Cool. So coming to this mistakes, how do we handle what do we say, config side of things? Like this is my personal question. जैसे अपना, let's start with environment file itself. तो config side of thing को prompting plus flutter flow से मतलब कैसे handle किया जा सकता है? Because config is always seen as a headache for maintaining. So any take on that? सो
Can you give example of this as in like कुछ अगर ऐसा कुछ आया होगा तो that will be more crisp मतलब उस Let's speak about that general issues when you have with flavoring. हम्म When your flavor sometimes, don't match your schemes, especially when setting it up. Schemes in the sense they don't. What do we say? Let's say dev कभी कभी टेस्ट को point कर जाता है, especially when beginners are setting up flavors. There's a general example that I'm taking because I'm recalling what mistakes did I make while I was dipping my toes. So हम्म especially in FlutterFlow जब आप ये सब setup कर रहे हो, so what caution should I take while prompting? टू बी ऑनेस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बोला कि फ्रेशर्स के लिए राइट तो फर्स्ट ऑफ ऑल Right. जहाँ पे जब आप डिप्लॉय कर रहे हो तो मैं तो वही वही कहा कि जैसे आप 5 फ्रेशर्स के साथ काम कर रहे हो तो ये चीज़ आप लाइक आप बिल्ड कर रहे होंगे राइट जब ये फ्लेवर्स की बात आती है तो प्लीज डोंट हैंड ओवर एवरीथिंग टू फ्रेशर्स डायरेक्टली तो यू नो व्हाट हैपन सो या सो आई गेस But जस्ट let's say I'm a fresher, I'm a guy single-handedly handling a project in a startup. I'm an या intern. सो दैट्स वेयर थिंग्स आर लाइक कि अगर सी अगर आपको कंपनी ने वो चीज़ सौंपी है राइट तो जस्ट बी कॉशियस जो आप कर रहे हो राइट और बिल्ड भी बना रहे हो तो हर चीज़ डॉक्यूमेंट करो बहुत ओल्ड स्कूल मेथड है बट बहुत अभी भी चलेगा एंड फॉर आई गेस बहुत ज़्यादा और चलेगा बिकॉज जो भी आप लिख रहे हो मैं तो बोलता हूँ पेपर पेन लेके लिखो चुपचाप वॉट एवर क्या करना है When हाँ we वो talk about paper pen leke likho, we already triggered our next question, that if you had to give one golden rule of prompt engineering in Flutterflow, what would it be? One golden rule. talk clearly like a junior Got it. or you are explaining something to your 5-year-old kid. Mm-hmm. That's it. या फिर मतलब whatever your prompt is, first type it in ChatGPT, tell like इसको prompt बनाओ. हाँ, प्रॉपर एकदम क्लियर रखो कि वो कोई भी समझ जाए ऐसे कि मतलब उसमें नो जार्गन्स ऐसे मतलब अभी देखो जो मैंने जितने भी चीजें बताई राइट जार्गन इसमें भी कंटेक्स्ट जो है वो ऑब्वियसली वो एलएलएम समझते हैं राइट Right, तो especially the थिंक example which you gave कि API का बस endpoint दे दिया, integrate this API, you never told it about how you're handling serialization, how you're handling state management. हाँ, तो उसके लिए तो आपका वही है ना कि आप अगर उतना एक्सपीरियंस हो तभी आप इन चीज़ों में प्रॉम्प्ट भी कर पाओगे, Correct, correct, राइट? तो आपको यही नहीं पता तो फिर आप लाइक मतलब उसमें एपीआई एचटीटीपी डीओ मतलब जो भी आप यूज़ कर रहे हो बट उसमें चीज़ें आपको पैकेज ही नहीं पता है तो आप यूज़ क्या करोगे उसका? तो दैट्स वेयर correct. थिंग्स गेट बोरिंग और टेक मोर टाइम। Right. So yeah, moving ahead, rapid fire. एक छोटा सा rapid fire खेल के then we'll try to close this. Before the rapid fire, any हुँ, हुँ। suggestions to give to everyone, not freshers, not seasoned developers, anyone who's using Flutterflow and just making a switch from conventional programming? It might be a CTO who's watching this and he wants to ask his Flutter team to use Flutterflow for all the small projects or uh, faster deliveries. So one, yeah, there are a few points that you would like to suggest. So I think when you ask why some Flutter project company who is already using Flutter projects or already using Flutter, why they should switch to Flutterflow, right? Kind of, but a heads up for them, something like tips and tricks, pro हाँ हाँ tips, हाँ, जैसे हो गए. okay okay. Or So maybe for any be it seasoned developers who want to take a switch to Flutterflow. Flutterflow is very good when you have so because let's suppose you have an e-commerce project, right? Um, Mhm. so Flutterflow के बहुत enterprises जितने भी है like ICICI Prudential, ICICI Lombard. So what they are doing, they have already created this whole thing, right? So they are again and again उनको अगर use भी करना है तो anyone can touch the code base without knowing anything because it's a visual code platform. So Point. if you are not you have less team और आपका developer चले जाता है कल को so you don't have to actually hire a developer just to maintain a project.
दैट्स वेयर इट गेट्स टू कूल कि आप वहाँ पे भी काम कर सकते हो, बिकॉज़ वहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये कंपोनेंट को यहाँ पे मैं ऐसे कर लूँगा, तो ये मेरा कॉपी भी हो जाएगा और आप खुद भी बना सकते हो, अगर आप थोड़ा-सा भी लर्निंग कर्व फॉलो कर लेते हो तो। इट्स लाइक इट टेक्स हार्डली लाइक 1 और 2 वीक्स मैक्स, आई वुड Right, exactly. और इसमें कुछ कोडिंग भी आपको है नहीं कि ज़्यादा कुछ, तो इट्स Hmm. वेरी इन दैट टर्म। All right, so let's start off our rapid fire. You have to give very crisp answers, and it should be fast. So let's get started. कूल। One word for FlutterFlow: overpowered or underpowered? ओवरपावर्ड, Okay. या ओवरपावर्ड। Another one word for FlutterFlow: overrated or underrated? So far, though underrated because I never. Okay, I don't have to explain that, right? Underrated because I have to say why I'm underrated. Saying because I don't see many enterprises are switching to Mhm. this just because they have कुछ तो सुना है ऐसे something. So yeah. Right. Okay, so your go-to LLM, especially for Flutter or FlutterFlow projects. As we talking about Google platform Flutter, so go to LLM. मैं अभी अभी एंटी ग्रेविटी यूज करके We are आया not हूँ तो we are not collaborating with anyone, so you can go ahead and tell. You need okay, not तो tell I Gemini. won't take name, I won't take name, but yeah, like मैं आईडी का नाम बता देता हूँ, तो आप लाइक अगर समझदार हो तो एंटी ग्रेविटी मेरा बेस्ट आईडी है, तो एलएलएम उसमें से कोई भी मॉडल चूज। All right, all right. Chalo, let's go ahead with the next question. So, one AI feature in Flutterflow that you cannot live without. वन एआई फीचर इन Flutterflow that you cannot live without. जो विजिट ट्री में लर्निंग है, सो इसका मैं थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देना चाहूंगा। अगर आप बहुत न्यू हो राइट और विजिट ट्री आप पढ़ रहे हो, प्लीज गो एंड ट्राई फ्लटर फ्लो। बैक इन 21 22 आई हैव लाइक कैसे काम करता है, लाइक मुझे लाइक थोड़ा सा मैंने स्टार्ट करा था व्हेन आई हैव स्विच टू कंपनी एंड थिंग्स, तो मैं वो विजिटरी देखता रहता था बहुत मैनी ऑफ द टाइम। तो वहाँ पे उस टाइम पे फ्लटर फ्लो इतना ये भी नहीं था। तो या विजिटरी इज वेरी गुड, मतलब आप देखोगे तो वो समझ में आता है चीज, मतलब आप देख पाते हो चीजें, राइट? मतलब हम कोड में बता नहीं पाएंगे हाउ टू, तो वहाँ पे आप देख पाते हो। Okay, cool. So, yep. So, going ahead with the questions. What is harder for you, logic or building UI? It depends, but I would say, yeah, logic building for now. Logic building तो हम AI से कर ले रहे, but yeah, for me as in person. For me, it's the other way. Logic, मुझे मतलब I don't know. I sucked at logic when I started off, maybe in my first job, but now somehow I write really good logic. मेरा system design वगैरह ठीक ठाक है, उतना खराब भी नहीं है. But UI में, of course, I make a lot of mistakes, and that job I है give तो to AI. आपका अगर कॉम्प्लेक्स है तो सी मतलब वो होने के Yes. लिए जाना, और लॉजिक इन द सेंस कि अगर कुछ कॉम्प्लेक्स है तो वहाँ पे बाकी तो यही क्या ही है, मतलब अभी तो यार एआई है तो Yep. So, yep. सब। Last question. Last question. If there was a dream AI feature in Flutterflow, what would it be for you? Which is not there yet. इंटीग्रेशन हो जाए ऐसे, मतलब ऐसा ड्रीम फ्लो का तो मजा ही आ जाए, मतलब ऐसे समझ रहे हो। All right. So, yep, that was really great. If the audience has any questions, you can put forward. And I think we don't have that much time. We are already reaching 9:54. So, also, we don't have much people watching us, of course, Sunday morning. So, of course, guys, if of course this video is going to be on YouTube forever until YouTube is there. So, you can shoot your questions in the comments. I'll directly forward them to Prashant, or I'll be putting Prashant's LinkedIn in the description and also in the comments. You can shoot questions to him. So, yep. Season 1 Fireside Chat. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. Thank you so much, थैंक्स uh, फॉर everyone who woke up on a वेरी Sunday morning to watch this. And thanks a lot to Prashant. So, Prashant, guys, let me be brutally honest and tell. So, Prashant was supposed to be traveling and he changed plans for this one live session. So,
Thanks a lot to you, man, It's for putting up a lot of spirit into community work. Thank you so much for being there on a Sunday morning. anytime, anytime. All right, then let's call it a day. Thank you so much, guys. You were a great audience, and do subscribe FFDG Hyderabad and the Hyderabadi Tech Guy. Also, go please for follow and connect with Prashant on LinkedIn. I'll be soon after this video. I'll edit it and put all the links in the description. So, yep, very happy Sunday. Thank you so much. Let's call it a day. Thank you, Prashant. Bye.